ओम श्री परमात्मने नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परां। यतिपतिपदभृङ्गं कौशिकाब्धीशचन्द्रं षडरिपुमतशक्तं वादिसिंहार्यभक्तं कमलनयनमार्यानन्दवर्यैकशिष्यं सकलभूतपरीचं योगिराजं भजामि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरागातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तवत्सल भगवान् को, श्रीकृष्णचन्द्र भगवान् को। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा भगवान सर्वेश्वर को भांगमयी मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण सदा जय। आज पनि अष्टम स्कंद को 18वां अध्याय को पाठ आरंभ हुन गइरहेको छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अष्टादशोऽध्याय। श्रीशुक उवाच इत्थं वीरिञ्च स्तुतकर्म वीर्यः प्रादुर्बभूव मृतभूरदित्यं चतुर्भुज शङ्ख गदाब्ज चक्र पिसङ्गभासा नलिना यतीक्षणः श्यामावदातो जसराजकुण्डल त्रिशूलसत्श्रीवदनं भुजपुमान् श्रीवत्सभक्षा वलयाङ्गतुल्लसत्किरीटकाञ्ची गुणचारुनुपुरा मधुव्रत व्रतविगुष्टया स्वया विराजिता श्रीवनमालया हरि प्रजापतिर्विश्वतमासुरोचिषा विनाशयन् कण्ठनिविष्टकौस्तुभा दिशा प्रसेदु सलिलाशयास्तदा प्रजा प्ररीठा ऋतवो गुणान्वितः देवरन्तरिक्षं क्षितिरग्निजिह्वा गावो द्विजा सञ्जरिषुर्नगाश्च श्रोणायां श्रवणद्वादश्यां मुहूर्ते विजिति प्रभु सर्वे नक्षत्रताराद्याश्च कृतजन्म दक्षिणं द्वादश्यां सविता तिष्ठन् मध्यं दिनगतो नृप विजया नाम सा प्रोक्ता यस्यां जन्म विदुर्हरे शङ्खदुन्दुभयो नेदुर्मृदङ्गपणवानकः चित्रवादित्रतूर्याणां निर्घोषस्तुमुलो भवद प्रीता साप्सरसो नृत्यन् गन्धर्व प्रवरा जगुः तुष्टुभुर्मुनयो देवा मनवः पितरोऽग्नयः सिद्धविद्याधरगणः सखिं पुरुष किन्नरः चारणा यक्षरक्षंसि सुवर्ण भुजगोत्तमः गायन्तोऽति प्रशंसन्तो नृत्यन्तो विबुधानुगाः अदित्या आश्रमपदं कुसुमैः समवाकिरन् दृष्ट्वादितिस्तं निजगर्भसम्भवं परं पुमां सम्मुदमापविस्मिता गृहीतदेहं निजयोगमायया प्रजापति साहजयेति विस्मिता यत्तद्वपुर्भाति विभूषणायुधैरव्यक्तचिद्व्यक्तमधारयदरि बभूव तेनैव सभामनो वटुः सम्पश्यतुर्दिव्यगतिर्यथा नटः तं वटुं वामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षय कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिं तस्योपनीयमानस्य सावित्रीं सविता ब्रवीत् बृहस्पतिर्ब्रह्मसूत्रं मेखलां कश्यपो ददात् ददौ कृष्णाजिनं भूमिर्दण्डं सोमो वनस्पति कौपीनाच्छादनं माता देवशत्रं जगतः पते कमण्डलुं वेदगर्भः कुशान् सप्तर्षयो ददुः अक्षमालां महाराज सरस्वत्यवेयात्मनः तस्मा इत्युपनीताय यक्षरडपात्रिका मदात् भिक्षां भगवती साक्षात् धुमादादम्बिका सती स ब्रह्म वर्चसे नैवं शवं सम्भावितो वटु ब्रह्मर्षि गणसञ्जुष्टा मत्यरोचतमारिष समिद्धमायितं वह्निं कृत्वा परिसमूहनं परिस्तीर्य समभ्यर्च समिद्भिरजोद्विजः श्रुत्वा स्वमेधैर्यजमानमूर्जितं बलिं भृगूणामुपकल्पितैस्तदा जगाम तत्राखिलसारसंवृतो भारेण गां सन्नमयन् पदे पदे तं नर्मदायास्तट उत्तरे बलेर्यरिद्विजस्ते भृगुकच्छ संज्ञके प्रवर्तयन्तो भृगवक्रतुत्तमं व्यचक्षतारादुदितं यथा रविम् तरिद्विजो यजमानः सदस्याः तत्विशो वामन तेजसा नृप सूर्यकिलायात्युतवा विभावसु सनत्कुमारो तदिदृक्षया क्रतो इत्थं सशिष्येषु भृगुस्वनेकदा वितर्क्यमाणो भगवान् स वामन छत्रं सदण्डं सजलं कमण्डलुं विवेश बिभ्रदयमेधबाटं मौञ्जा मेखलया बीतमुपबीता जिनोत्तरं जटिलं वामनं विप्रं मायामाणवकं हरिं प्रविष्टं वीक्ष्य विभवः सशिष्यते साग्निभिः प्रत्यगृह्णन् समुत्थाय
संक्षिप्तस्तस्य तेजसा यजमानः प्रमुदितो दर्शनीयं मनोरमं रूपानुरूपावयवं तस्मासनमाहरत् स्वागतेनाभिनन्द्याथ पादौ भगवतो बलिः अवनिज्यार्चयामास मुक्तसङ्गमनोरमम् तत्पादशौचं जनकल्मषापं सधर्मविन्मूर्ध्य ददात् सुमङ्गलम् यद्देव देवो गिरिशचन्द्रमौलिर्ददार मूर्ध्ना परया च भक्त्या बलिरुवाच स्वागतं ते नमः तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षान्मन्ये त्वारे वपुर्धरम् अद्य नः पितरः तृप्ता अद्य नः पावितं कुलम् अद्य शिष्टः क्रतुरयं यद्भवानागतौ गृहान् अद्याग्नयो मे सूता यदा विधिद्विजात्मज त्वच्चरणा वने जनैः अतामसो बार्भिरियं च भूरौ तथा पुनीता तनुभिः पदैस्तव यद् यद्भटो वाञ्छति तत्प्रतिक्षमे त्वामर्थिनं विप्रसुतानुतर्कैः गां काञ्चनं गुणवत्ताममृष्टं तथान्नपेयमुत वा विप्रकन्यां ग्रामान् समृद्धान् तुरगान् गजान् भारतान् तथा रथमसम्प्रति च ग्रामान् समृद्धान् तुरगान् गजान् भारतान् तथा रथमसम्प्रति च हरि ओं तत्सदिति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे वामन प्रादुर्भावे बलिवामन संवादेष्टादशोऽध्याय हरये नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः ओं पुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्री कृष्णचंद्र भगवान को श्रीमद्भागवत महापुराण को लक्ष्मी नारायण भगवान को जय जय श्री राधे।